Hello, everyone who is watching me on Desi Web USA. Please watch me with Urmin on Desi Web USA, where I'm talking about Dial 100 and also about my career, also about some few of my friends. So, expecting you all to join us with Urmin. Desi Web USA, the perfect dose to your entertainment. Hi guys, Yes, Urmin. नमस्कार मैं हूँ उर्मिन. Hello everyone. This is उर्मिन and welcome to देसी वेब USA. आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, अगर हम 2021 इस साल को पकड़े तो 27 साल कंप्लीट किए हैं. 3 नेशनल अवार्ड जीता है इन्होंने. पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है. 4 फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीते हैं. 2 पांच एशिया पैसिफिक, 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं. तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इनके घर में बर्तनों से ज्यादा अवार्ड्स है. मनोज बाजपेयी जी, हाउ आर यू डूइंग? Very well, actually. Thank you very much. I hope all of you are safe and healthy. So nice to see you, sir. And yes, we are safe. I hope the same for you as well. And आपकी नई नवेली फिल्म मैं आपको बता दूं कि कल ही मैंने देखी, डायल 100. एंड बहुत Wow. बहुत मुबारक आपको फॉर बीइंग just so fabulous as always. Thank you very much, Urban. Thanks a lot for really inviting me on your platform and also watching Dial 100. I just hope that you liked it and your family loved it. Well, I have to also add the fact that सिर्फ मैं नहीं, आपको आज हमारे जो ऑडियंस है वो इंटरनेशनली देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ शो दैट इज मोर पॉपुलर इन America, and everybody who loves you on popular demand wants to just say that, you know, Manoj Bajpayee jaisa koi nahi. I think you have created a mark. If there are actors who want to learn acting, आपने अपने आप में ही एक स्कूल बना ली है. How does it feel, Manoj ji? I know I feel grateful and thankful. That's what it feels. It just feels that because getting love and admiration from the audience, and they are standing by you by all the work that you do, and shower you with all the praise and encouragement. Nothing beyond that, right? Yeah. कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपकी फिल्मों में there's always been a very different character, even though we relate to it because आपके कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं. लेकिन एक सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप कैरेक्टर देखकर एक फिल्म के लिए हाँ बोलते हैं या फिर स्क्रिप्ट? व्हाट एक्साइट्स यू मोर? बोथ एक्चुअली. स्क्रिप्ट एक थोड़ा सा कुछ उसमें अनोखा होना चाहिए, उसकी स्टोरी टेलिंग, उसका what all it touches upon, what are the characters, and how the character which is being offered to me वो कितना वो सही है, how it is all placed, कितना strength है उसमें, क्या उसके dynamics हैं, and then the director and the whole entire project. And it's a mostly sometimes you choose it on your instinct, sometimes you put all your experience into choosing your script. Speaking about Dial 100, how was it working with नीना गुप्ता जी? एक ही एक्चुअली सीन था आप दोनों का, लेकिन आप दोनों such strong characters, such great actors. How was it sharing the screen space with her? Oh, it's a privilege to be sharing screen space with Naji. I mean, just look at her entire career or life. It has been so inspiring for not only for women but also for men. I mean, me and my family, all of us are big fan of her. So when I was shooting that scene, I just felt so honored, just sitting next to her, chatting up with her, acting with her. So I really can't explain how delightful it was to see her in person and rehearse with her and act with her. Manoj ji,
आई एम रियली ग्लैड कि ये इंटरव्यू मैं तब ले रही हूँ जब मैंने फिल्म ऑलरेडी देखी है। तो बहुत सारे ऐसे फिल्म के सीन्स है, डायलॉग्स है, ऐसे बातें हैं जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। विदाउट टेलिंग मोर टू आवर ऑडियंस हु हैवंट वॉच्ड द फिल्म, खास तौर से मैं एक शेयर करना चाहूंगी, एक सीन है जहां पर आपका जो रिएक्शन है वो मुझे वाकई में इट जस्ट फेल्ट गोल्ड। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट द डॉक्टर इज हैविंग विथ यू टुवर्ड्स द एंड, एंड आमतौर पर जब हम कोई न्यूज सुनते हैं तो एक शॉक सा एक एक्टर रिलेट करता है, लेकिन you just had a very very different reaction. I think I hope you know what I'm talking about. जब आप कहते भी हो कि can I just see him then, हाँ तो सब ठीक ही है ना, तो क्या मैं मेरे बेटे को देख सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, every time you are on screen you have a very different zone that you are in. खुद से आप क्या बातें करते हैं before you start a shoot? Do you have a talk with yourself? I know it's never about only about shoot, Urmin. I mean, we prepare ourselves and we go through the scripts. We start shooting much later on. You know, it's the preparation for this for the role and the scenes and the film. You know, it goes on, and the process of preparing that character, making that character, is a whole different game altogether. And then we do it. We do rehearsals, and then by many rehearsals, then we take the shot, then we take few more shot, few more takes. It goes on. So preparation, when you're preparing for a role, this is where you know uh, the character starts shaping up, and then you start understanding all the nuances of it, and you keep taking physical notes or mental notes about it. It's never just what happens in front of the camera, but what has happened before coming in front of the camera is the real one, actually, for me. So 27 years in the industry and we've created such amazing characters on screen, बड़े पर्दे पर, क्या कोई regrets रहे हैं? Have you ever regretted a show, a film, or have you ever regretted saying no to a film? No. I mean, you don't regret. When I've said no to a big blockbuster, and where my part was not small, it was quite lengthy. But I said no to it. I said no to it because I couldn't relate to the character. I couldn't relate to the whole script, and I don't regret it because that's my choice. I was very clear since much earlier what I wanted to do, and I wanted to do things according to the dream that I have seen about myself in my childhood. I know there is complete humility about it. It's just that dream is mine, and I can only live my dream. I can't live somebody else's dream, right? So I don't uh, compromise on that. So I do things where I relate to it, where I think that I'll really enjoy on the set doing it. If it is all mixed up, and if there is any suspicion about that, doubt about that, I keep myself away from it. Manoj, do you see yourself having any plans on going to Hollywood and doing films there? It's not easy. Hollywood is a far more difficult industry, and having an agent, having managers, and all that. When I was a child and was seeing the dream of becoming an actor, this is what I could see. This is the Mumbai, coming to Mumbai, coming all prepared after doing theater was my dream. Okay. This whole American films and everything, happened much later. So, starting all over again, going and staying in LA and struggling is something I can't do. I know I'm not too young for that. Well, then we are so lucky to have you in our country. This is the biggest prestigious thing for us, I would say. Yeah, thank you very much. But I'm enjoying my life here. And if there is anything that will come to me,
I'll definitely measure it, and if everything goes off well, I'll definitely do it. But to expect me to now go to stay in LA and start going from one building to another, chase, I can't do it now. Since your film is called Dial 100, जो कि एक emergency number है, I have a fun contest that I'd like to play with you. आप मुझे ये बताएं कि if the following people call you up, आपके हिसाब से क्या emergency होगी? कौन सी funny emergency हो सकती है? Let's start with your beautiful wife. अगर उन्होंने आपको फोन लगाया तो कौन सा एक फनी इमरजेंसी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको कॉल किया? जब मेरी बेटी बहुत तंग करती है तभी वो इमरजेंसी कॉल आता है कि इसको बनाओ, इसको समझाओ, है ना? तो and my daughter is quite a willful child, so they keep fighting, both mother and daughter, and when my मेरी वाइफ से नहीं संभाल पाता तो वो मुझे फोन करती है. This is right out of the scene from Dial 100. Exact scene to scene लग रहा है ये तो. नो, तो सारी फैमिली का है. वो किसी सिर्फ निखिल सूद के फैमिली का नहीं है, सारी फैमिली का यही चक्कर है. अगर फैमिली मैन के जस्ट जेके ने आपको कॉल लगाया तो क्या इमरजेंसी होगी? अगर फैमिली मैन के जेके ने फोन लगाया है तो उसको कहीं पे खाना खाने जाना होगा. अगर अनुराग कश्यप ने आपको फोन लगाया तो क्या इमरजेंसी होगी? अनुराग कश्यप हमेशा जो है फोन तभी करता है जब वो कुछ करने की काम की बात होती है, नहीं तो वो फोन नहीं करता है. वो मतलब इसलिए आई ओनली एक्सपेक्ट दैट ही इज गोइंग टू टॉक वर्क विद मी. अदर देन दैट ही डजंट कॉल. अगर सत्या फिल्म के कल्लू मामा ने आपको फोन लगाया तो क्या इमरजेंसी होगी? सत्या के कल्लू मामा मतलब कि चल कहीं बैठते हैं, पार्टी करते हैं कहीं पे, उसका यही होता है. या गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में तेरे लिए वाइन या शैंपेन रखता हूँ, चलते हैं ड्राइव पे. ही लव्स ऑल दैट. अगर फैजल ने फोन लगाया, गैंग्स ऑफ वासेपुर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझे फोन लगाता रहता है. और लेकिन इस बार मैंने फोन किया तो फोन उठाया नहीं उसने. लगता है कि फोन का नंबर चेंज हो गया है, कुछ हो गया. लेकिन नवाज जब फोन करता है तो हम लोग लंबी बात करते हैं, बहुत लंबी बातें करते हैं. कैसे हो मनोज भाई, क्या कर रहे हो, कहाँ थे, सो एक बड़ी लंबी बातचीत होती है. नवाज और मैं एक दूसरे को दिल्ली थिएटर से जानते हैं. सो एक अजीब सा प्रेम है. So I speak to him. I ask about his family, his daughter and son and his wife, and कौन से स्कूल में है, क्या कर रहे हैं. तो या कभी ये होता है कि आइए मनोज भाई कहीं बैठते हैं, तो हम लोग मैं चला जाता हूँ. फिर हम लोग एक छोटा सा अपना एक प्राइवेट सा गेट टुगेदर भी कर लेते हैं. फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको एक आपके घर की जो केयरटेकर है, बाई है, उन्होंने फोन किया तो किस इमरजेंसी रीजन की वजह से मनोज बाजपेयी को फोन करेंगे? दीदी दरवाजा नहीं खोल रही हैं. My God, Manoj ji, honestly, I just feel so privileged having taken this interview, क्योंकि जैसे मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था, you are like an university for all the actors. लेकिन जब आप बैठकर अपनी फिल्में देखते हैं, एक ऐसी कौन सी फिल्म है मनोज जी that you feel most proud of, where you worked, you thought you... I'm so proud of Satya, Shul, Pinjar, Viku Matre for life. Yeah. So I'm very proud of the fact that I kind of used that opportunity very well, if I put it this way. So I feel proud of that fact. और सत्या अभी भी जो है, अगर आप देखिए तो एक वही फिल्म है जहां पर मैं कभी किसी सीन में I just get drawn into it. नहीं तो बाकी मैं हमेशा क्रिटिकल होता हूँ अपनी चीजों को देखते हुए. Well, we really enjoy every bit of you, मनोज जी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Dial 100 इस कॉन्सेप्ट में आपका जो किरदार है वो इतना ज्यादा ग्रिपिंग है कि till the end you have kept keeping us, just blown away with your work. And it's, मैं क्या कहूँ और, sorry, I really don't have much to say, but just lots and lots of love to you.
Thank you, Urmil. Thanks a lot, and thank you for waiting for me to come on this. Thank you. Thank you, Manoj ji. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. And Thank you. hope you stay safe. Thank you so much for joining me. Desi Web USA. The perfect dose to your entertainment.